So today's class we are going to continue with our जो हमारा था ना scattering collisions, elastic collisions. Collisions में हमने masses, we took same masses or different masses. So we studied collisions in earlier classes. Now we did the same thing in our study of classical mechanics. अब इसमें ये है कि the thing was that after that we also took elastic, just close the loop. Elastic collision in the context of scattering. And we took an scattering of some particle, उसकी जो relation थी, a loose analogy with how sort of a particle comes from infinity and it's going to repel. It will after, just like a Rutherford's formula, उसका एक scattering है ना, a particle coming in and a particle coming in, so maybe which you might have read. So having under the influence of the field, it's going to repel, but it's having a parabolic path. Okay, this is also sort of not collision; it's sort of invisible collision, but collision may be due to field. Field के particles repel कर रहे हैं. ठीक है. अब यही है कि now we are studying these all the things vis-a-vis what in relation to our understanding of collisions in classical mechanics. So before we are going to further continue, I'll just to recap के लिए there were two diagrams which are, जैसे कोई particle आ रहा है, this particle for example, a particle comes in, so you can have so use some terms, because in terms का इस्तेमाल time and again you will see terms like scattering cross section, terms like impact parameter, terms like effective cross section. So you should be very much conscious. जैसे आपको कोई चीज पता है ना, ये मेरा नाम सुहेल है, इसका नाम इदरीस है, किसी नाम, so you don't think over it. I ask you. So in the same way, you should be, these things should be impact parameter, you should know, rather than कि आप सोचो ये है क्या, ठीक है? You will try to recall, because these terms are used time and again in the vocabulary of classical mechanics, in the vocabulary of classical. So before, so ये तो मैंने कहा था, but before we are going to say, to recap it. तो for example कोई particle आ रहा है, तो we use some angles. इसको यहाँ से यहाँ तक जो distance है, इसको हमने रो के साथ डिनोट किया था, if you remember. And this was denoted by pi naught. And this angle was denoted by chi. Chi was that in absence of the field, the particle क्या जाएगा? It will go straight. But if there is some field, जिसकी वजह से it is going to, this angle is going to change. So इस angle का relation इस angle phi naught के साथ क्या है? ठीक है? So if you remember, chi, in terms of chi, we said chi was basically pi minus 2 phi. So this much it's fine. So in the same way, if you remember, हमने in the previous class when we studied elastic collisions, we had two cases when m1 was greater than m2 or m1 was less than, है ना? Two particles are coming and they are striking each other, colliding each other. In the simplest case was that if the masses are equal, the velocities will simply get exchanged. But if the masses were कम ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? The problem becomes slightly more complicated. उसी को हमने, if you recall the previous class, तो we had diagrammatically two sorts of diagrams vectorially, जिसमें हमने momentum को denote किया था ऐसे, जैसे एक का मोमेंटम P1 है, P2 है, ये एंगल chi है, ये θ1 है, ये θ2 है. It's only to recall so that you will not get confused in today's class. So it's for, one is for mass m1, this is chi,
This is theta 2. This is theta 1. So for, if you remember pictorially, for collisions where masses was greater, the diagram took shape of this form. इसको पढ़िएगा. And when the masses is less than this, तो ये इसका theta 1 circle से बाहर आ रहा है. You just try to concentrate. So having these two ये जो information हमारे पास अब है, तो what we are going to study is now scattering. तो scattering हमने last time study की थी, but this time what we are going to study is a particular case which is famously studied in physics, that's known as Rutherford's scattering formula, है ना? तो वहाँ जैसे कोई भी वो गोल्ड फाइल्ड न्यूक्लियर में उसने कहा था, है ना, देयर वाज समथिंग हार्ड हिटिंग थिंग. सो इसका एक्सप्लेनेशन हम क्लासिकली भी कर सकते हैं. You need not necessarily go to quantum mechanics. So classically you can explain, you have a classical formula by which you can explain the trajectory of the incoming particle and उसका जो field कैसे करेगा. So again I come back, हमारे पास क्या होता है when you study जो motion, equation of motion, हमने इसको in terms of what किया था? In terms of phi naught we try to solve it, है ना? Phi, there we get 3 terms in the Lagrangian, if you remember. First term centripetal thermal potential energy. Potential energy का form था 1 by r square या 1 by r, ठीक है, for bounded systems. So if we have that, if you have phi naught जो हमारे पास equation of motion थी ऐसे, or minimum to infinity, the particle is coming from infinity to or minimum. So you again go to the previous class where we had trajectories of parabola, ellipse. So it will come into this thing. The particle is coming from infinity and having some effective minimum radius. So this was the equation of motion of जो भी है हमारे पास, है ना? This was the equation. Now, so again, what we are going to do? We are now going to do some substitutions. We are going to do some substitutions in the sense that we are going to solve this equation. इसका भी है ना integral from phi naught to phi naught to this is integral from, है ना, जैसे particle travels कर रहा है ऐसे, ये आ रहा है कहाँ से आ रहा है? It comes from infinity, having some towards some minimum effective radius. Now we are going to see its trajectory in some equation of motion, through some, and we have to solve this differential equation within the context of this thing. ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? So अब ये है, if you remember, so this is equation 18.4 of the book. 2m ये है यहाँ पर minus 2u mv infinity. If you remember last week just, so this was the equation. अब इसी equation में हम what we are going to do, we are going to use a potential of the form like this. So we are going to have the potential substitution of potential in the ये 1 by r field में ये particle है, having a potential which varies like this. अगर graphically भी आप डालोगे ना, if something potential varies with respect to r, तो इसकी क्या आएगी ना ऐसी sort of trajectory. So in this equation of motion, now we are going to substitute u के बदले 1 by r, and vis-a-vis this diagram we are going to see it, इसका phi naught क्या है. तो अब इसमें थोड़ा सा I just put you in some exercise at your place. Exercise is that this is the particular value of solution comes in the form of phi naught is equal to cos inverse alpha by mv infinity square rho by root of 1 plus alpha by mv infinity square rho square. Now how does it come? अब इसमें है ना, it's basically what? It's basically cos of phi naught. Cos of phi naught, sorry.
basically once you substitute it here, you thinks here, तो आप इसको करो in terms of cos defined, it's base over hypotenuse, ठीक है? And from that very thing you can have a particular value of phi. You can have a particular value of phi such that अगर आप rho square को if you keep rho square in terms of this constant जो हमारे पास ये है ना, this we write it in terms of, you can have as this thing. And phi naught हमारे पास है phi naught is equal to 1/2 pi minus chi. ये पिछली बार मैंने कहा था ना, this is phi, so this will also be phi naught. So this will be twice pi minus chi plus twice pi naught is equal to chi plus is equal to 2 pi. So from this we can have phi naught is equal to this. So what we are going to do, we are going to reparameterize our variables in terms of this diagram, in terms of जो इसको phi value, chi value, tan theta value, ठीक है, सबको in terms of we are seeing it in terms of cos phi with our previous understanding जो हमने की थी, ठीक है? So this is what we are going to do. Now again, if we put now अब यहाँ पर अगर cos phi ये है, तो you should be able to deduce tan phi naught is equal to this. आप कैसे करेंगे? You are going to इसको पहले यहाँ लाएंगे, ये sin square, ये cos phi नीचे आएगा, ये cos square phi आएगा, फिर वहां से base by hypotenuse निकालेंगे, फिर वहां से perpendicular कर लेंगे, फिर perpendicular tan theta phi is equal to perpendicular by base, and from that you will get this value tan phi naught, ठीक है? So tan phi naught is sort of basically आप देखो tan phi naught में आप चलो ठीक है, tan phi naught यहाँ तक. Now if this is equal to this, if you substitute here, तो it is tan of phi naught किसके बराबर आएगा? tan of pi minus ये आएगा cot में आएगा इसका वैल्यू. तो rho square can be equal to m square v infinity square. So tan of 1/2 pi minus this is equal to cot, so you can also write it as like this. Now what we are going to do again, according to the book, we are going to differentiate it again. This is 2 rho d rho by in terms of chi. So and rho you should be knowing rho को हमने कैसे सब्स्टिट्यूट किया? rho को हमने ऐसे डिफाइन किया, and rho is depend upon chi. Chi is this angle. इसको क्या हमने कहा? What would you do? इसको हम क्या कहते हैं? This angle. शाबाश. It's very important thing. मुझे याद नहीं आ रहा है. Impact parameter. एक ये हो गया impact parameter. Rho is impact parameter. So impact parameter chi will be 90 degree when there is no in absence of this thing. So this relationship is a sort of relationship between rho is in terms of हमने chi किस terms में है. This is the relationship of rho and impact parameter. यहाँ से यहाँ कितनी distance होगी? ये ज्यादा और कम भी हो सकती है, depends chi का वैल्यू क्या है. So there is a relationship of rho and chi in terms of आप देख सकते हैं. तो वहां से पार्टिकल आ रहा है. What's the particular relationship between rho and, अगर chi ज्यादा कम हो रहा है ये ऊपर जाएगा, ये कम ज्यादा होगा, ठीक है? So whatever, so you can see it from this relation. So if it is this, so we have to differentiate it with respect to chi. How rho changes with regard to, and rho is basically angle chi.
how chi, rho is basically apart from these parameters. It's cot of chi. Sorry, it's not chi. It's cot of chi. It's basically depend upon a perpendicular over base or base over perpendicular. So you have to accordingly see diagram में क्या है. So if it's d rho by d chi, so d rho by d chi will come out to be alpha by m square v infinity square तो ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 cot of chi by 2 into cosec. डिफरेंशिएशन ऑफ cot है ना cosec आएगा है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ cot is cosec square की cos square minus cosec square. ठीक है. So we are doing nothing. We are doing simply the algebra of intact parameter scattering cross section. How they vary vis-a-vis each other. ठीक है. In terms of equation of motion जो हमारे पास स्टार्ट में having the potential 1 by r potential में हमने जो किया था इसमें हम स्टडी कर रहे हैं. So doing this algebra we arrived at this thing. So again the book has not. अब ये if I go back if you remember last time हमने किया था scattering cross section को we had a particular way of writing it. d sigma and scattering cross section को हमने in terms of दिखा था solid angle. ठीक है. जैसे कितने particles in a given ये निकल रहे हैं. If two particles are colliding, तो in a given volume क्या हम एक में निकाल रहे हैं कोन का एक पोर्शन फिर इंटीग्रेट करेंगे throughout whole surface. So it is the relationship of scattering cross section rho and sigma. तो इसी को हमने कहा था effective cross section भी. First what we are going to do, we are going to write it in terms of देखो यहाँ d rho by d sigma है ना, d rho by d chi, d rho by d chi. तो इसके बदले हम लिखेंगे d sigma ये sin chi, d sigma sin chi by rho chi du. ठीक है. We are going to substitute this equation here. d rho by d chi के बदले हम लिखेंगे ये. So effective cross section को हमने in terms of d rho लिखा. Rho is basically this impact parameter. ठीक है. This is what we are doing. So after आपको you got me what I'm doing. I'm simply substituting it one thing using equation of motion and using this diagrammatics. So if you इसको बदले आप d rho इसके बदले यहाँ ये आएगा. So ये d sigma आएगा यहाँ पर. So some you will simplify things and it will come out to be do. अब इसमें ये है देखो ये आएगा ना, ये कोसेक स्क्वायर ये नीचे आएगा, ये साइन स्क्वायर काई बाय 2 आएगा, ये आएगा कॉस बाय साइन, ये एक और आएगा ये साइन क्यूब आएगा. हाँ साइन क्यूब आएगा. हाँ ठीक ये आएगा cos of 1/2 chi by d chi. ये आपको समझ आया कैसे आएगा. इट इज cos by sin, ये 1 by sin 1 by cos chi by sin chi by 2, ये आएगा 1 by sin chi by 2. ये है ना कोसेक, ये 1 by sin 2 बार आएगा, ये 3 बार आएगा, ये क्यूब आएगा नीचे. ठीक है. सो दिस इज ऊपर अपना है कॉट के बदले cos by sin. So if it is this much, now he has introduced the book has introduced our अब इसने so you can do one thing here what he has done. तो cos chi by 2 है ना, sin theta by 2 cos theta by 2 किसके बराबर है, sin 2 theta के बराबर आएगा. So ऊपर हम एक रखेंगे sin chi by 2,
बट नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन काई बाई 2 के साथ, सो इट विल बी साइन काई बाई 4, ऊपर सिर्फ कॉस ये रहेगा, साइन काई बाई 2 इंटू कॉस काई बाई 2, तो ये आएगा साइन काई बाई 4, ये साइन थीटा कॉस थीटा आएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। सिंस ये है काई बाई 2, 2 कट जाएगा, साइन काई आएगा, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, अल्फा बाई 2 m v infinity स्क्वायर, क्योंकि वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल, ये साइन काई साइन थीटा डी थीटा है ना, इज इक्वल टू ये डी यू, उसी का कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, हम कोण का एक पोर्शन निकालते हैं, तो इट इज बेसिकली डी ओ डिवाइड बाई, ये नीचे आ गया आपको, इट केम आउट टू बी दिस थिंग, सो दिस इज फेमसली व्हाट इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग, जो लिटरेचर में आप पढ़ते आए हैं बुक्स में, आपने इसकी, वी हैव नाउ ए classical understanding of this thing in terms of impact parameter, in terms of the scattering angle, in terms of phi naught, ठीक है, in terms of basically equation of motion phi naught, from classical equation of motion, under the potential 1 by potential varies as alpha by r, so we have arrived as this relation, a sort of thing we can explain scattering cross section in terms of masses क्या है, velocity क्या है, काई एंगल क्या है, ठीक है, दिस इज नोन एज रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एंगल, और रदरफोर्ड्स फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। सो मे बी रदरफोर्ड्स फॉर्मूला जो है, इट केम आउट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटेशन आर्गुमेंटेशन, है ना, लैब में उसने किया, लैब, बट वी हैव अ क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन इट क्लासिकली as collision of particles in that understanding. So if I use the words of the book, जो बुक के अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, तो what does he say? Formula gives, what does this formula give? This Rutherford's formula gives effective cross section it may be noted that effective cross section is independent of sine of alpha, ठीक है, so that the result is equally valued for repulsive and attractive fields. So इसमें ये कह रहा है कि it is oblivious of the sign. Oblivious means it is insensitive to the sign, plus minus पे फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ अल्फा, ये कह रहा है कि इट्स नॉट डिपेंड अपॉन, अगर प्लस माइनस ये होगा ना, अगर प्लस माइनस होगा ऐसे आ सकता है, डायग्राम ऐसी आ सकती है, ठीक है, बट ही इज so the result is valued for repulsive as well as अब ये कि it is the result can be valued for both repulsive forces as well as for, so अगर ये बाहर से आकर in the presence of field it will come like this or it will come like this. Sometimes sign plus minus आने से हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं, not always, जैसे डिराक का पार्टिकल एंटी पार्टिकल, वहां उसको प्लस माइनस का साइन आया था, तो उससे हमने कहा, उसने कहा कि सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप निकालते हैं ना प्लस माइनस रूट्स, समटाइम्स we do it throw the some solutions. Why we throw away some solutions, है ना, so it's a matter of expediency मतलब it's matter जो physicist है ना, sometimes it may feel helpful plus minus value की, it's not always ये hard stone में लिखा हुआ बात, this is what I want to say. अब ये है कि now here comes to the discussion of laboratory frame and जो हमने डिस्कशन किया था, लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फील्ड। लेबोरेटरी फ्रेम में क्या था,
लेबोरेटरी फ्रेम में है कि द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग एट सम आउटसाइड द वी आर सीइंग कुछ, मगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वंस दे आर कोलाइडिंग द मास इज उनका वो सेंटर पे और मेजरमेंट इज फ्रॉम दैट सेंटर, ठीक है। सो इफ ये कह रहा है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एट द फ्रेम in which the center of mass or colliding particle is at rest. The transformation of laboratory system is effected by means of formula this. So now we are coming back to our previous understanding of जो हमने किया था effective cross section निकाला था for masses these two cases. तो for simply m1 is equal to m2 जो आप क्लास में earlier भी पढ़ते आए 11th क्लास या 12th क्लास में collisions. So velocities simply get exchanged. तो मसला आता है when the velocities are not masses are not same. So some of the velocities of one particle may go into another or vice versa. या velocity इधर उधर हो जाएगी, net momentum conserve रहेगा, but there may be transfer of velocities from one to another. ये है मसला। अब इसी चीज को हम we are going to study it in terms of lab frame and center of mass frame. So if in terms of formula 17.4 हमारी formula जो है, हाँ again just have it theta 2. So if you remember वहां यहाँ थीटा 1 ये है, ये थीटा 2 है, ये काय एंगल है, ये थीटा 1 है, यहाँ फिर एक में when mass was greater than ये डायग्राम यहाँ जाती है। तो you again have a look over these diagrams. Theta in terms of chi, theta in terms of chi. So this is using this understanding in our understanding of scattering cross section. जो हमारे पास if you remember, हाँ if you have some question you can ask, clarification है, you just see इधर देखो आप, if you want to clarify something just ये तो हमारी रदरफोर्ड्स फॉर्मूला है एट द एंड। V infinity is the particle is coming from infinity, आप याद। अब ये है कि now this chi का value we are taking value of chi, this chi का value in terms of हम लेंगे pi minus 2 theta 2। Chi is this, if you take this value and obtain scattering cross section of particle 2, so it will be, now हम क्या करेंगे काम, so ये है ना do, तो chi को in terms of this value लिखेंगे अब, theta 1 theta 2, this theta 1, so एक में m1 is greater than 2, दूसरे में m1 is, so थोड़ा सा आप you just take recourse to our previous class. Now what we are going to, हमारे पास रदरफोर्ड फॉर्मूला आया, so to translate it in terms of lab frame and center of mass frame, इस formulaic understanding को हम modify करेंगे under this previous thing, either mass is smaller or greater. So how will this formula look like? ये हमारा काम है। So the formula after this substitution, यहाँ अल्फा को in terms of theta 2 लिखेंगे, do को भी, so it will come out to be ये है ना, ये है do, it's sin theta d theta, ठीक है, ये बेसिकली sin phi d phi जो भी है, अब we are writing in terms of angle theta, theta 2, ये है ना d का, ये pi आएगा 0 2 d theta 2 आएगा, that's why it's theta 2 is sin theta 2 d theta 2 divided by
अब ये cos ऑफ थीटा, ये cos थीटा टू क्यों आया? शाबाश, एनीबॉडी सी? ये ना cos ऑफ, ये साइन ऑफ एंगल है ना काई, साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा 2, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आएगा ना cos थीटा, तो ये आएगा cos थीटा 2। अब एक 4 है, ये क्यूब 1 है, तो एक ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये DO है, ये साइन थीटा D थीटा है, सो यू विल जस्ट सी इट हाउ वन ऑफ द, इसमें ये 4 है ना, ये क्यूब है, ये ऊपर वाले से कैसे कन्वर्ट हुई, वो वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं। साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस 2 साइन थीटा, ठीक है? तो जस्ट वन कैंसिल। अभी कह रहा है there is a particular statement, if the same formula in the book leads to more complicated formula, and we are going to use simplest cases. Simplest cases में for two particles the formula comes out to be this. Two particles may be this. Two particles of different masses having momentum P1, P2 and angles theta 1, थीटा 2 एंड काई। आप देखना उस डायग्राम में हमने कैसे वो नोट किया था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर डायग्राम्स। जैसे कोई पार्टिकल आता है यहाँ से, मोमेंटम P1 P2 है ना, इसका भी रिजल्टेंट आता है ना। द सेम वे आप डायग्रामेटिकली क्या देखते हैं। अब ये इफ M2, so just wait 5-10 minutes, stop. If M2 is the scattering particle is large compared with mass M, of a scattered particle, then chi 1 is equal to theta 1, M1 is equal to so that D sigma is equal to, अब देखो यहां पर इसने क्या किया है, ये है ना, ये काइनेटिक mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2E, तो इसने इसको ये 2 और 2 अपना ये, तो ये 4 ही है। तो इस सब को इसने ये इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल लिखा है, DO लिखा है, and sine of 4 1/2 theta 1 again. So again, if you want to change this into the sine theta into cos theta, you can change it, है ना। इसको in terms of sine ही लिखो आप। So you just do this thing here, ठीक है, some bit of algebra. So here E1 is equal to is the energy of incident particle. अब ये है दूसरा केस, जो आसान केस हमारे पास है। आसान केस हमारे पास है आसान केस हमारे पास है M1 is equal to so this is one sigma. So this one was written as sigma 2. So the case of one sigma 2 was when the masses may be different, greater or smaller. दूसरा केस अपना वाला केस है when the masses are same. So the formula will be equivalent to D sigma 1. So what we are going to do, we are going to see whether masses are same or whether masses are, net formula हमारे पास क्या है, ठीक है, at the effective cross section after the collisions, after the
in terms of some एक formula की form में हमारे क्या आएगा, that's our thing. So d sigma will be equivalent to cos theta d theta 1. So again you should you should be comfortable with how we change sine into cos, cos into sine, vis-a-vis how we relate theta in terms of chi and pi. ठीक है, थीटा इन टर्म्स ऑफ यहाँ एक तो ये फाई है, ये वाला नहीं, ये वाला दूसरा वाला दिस, हाँ ये वाला. सो अकॉर्डिंगली cos एंड sin कैसे चेंज होगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अकॉर्डिंगली दिस फॉर्मूला विल आल्सो गेट मॉडिफाइड. यहाँ sin थीटा है, यहाँ क्या आएगा. अब ये है कि नाउ आई जस्ट राइट द टोटल इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन. So we are arriving at a very general result. General result means total effective cross section of all particles. क्या आएगा? Of any mass m1. Effective cross section क्या होगा? After collisions, net number of particles जैसे कितना किसी में, तो it will be particles having same mass, और particles having उन दोनों का ऐड करो, both of them together. तो it will be d sigma will be equivalent to d sigma 1 plus d sigma. So it will be this plus this. So it will be interesting. So it's somewhat. So आप इसको थोड़ा सा इसको आप बाहर रखिए. And replacing theta 1 and theta 2 by common values of theta. So theta 1 and theta 2 को हम common values of theta, ये है ना theta 1, ये है theta 2. So he is saying we transform theta 1 and theta 2 by some common values of theta. So theta 1 and theta 2 को in terms of some common value of theta हम लिखेंगे. ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, वो how we are going to do is like हाँ, we are going to take उसी एंगल पे, जिस एंगल पे स्कैटरिंग फॉर सेम पार्टिकल्स होगी, एंड उसी एंगल पे when the scattering is for particles of different mass, at that point we can take theta 1 is equal to. So if you assume this approximation, जो हमारी फॉर्मूला है, it will further simplify. आप देखो इसको, आप एक में sin थीटा है, दूसरे में cos क्यूब थीटा है, तो इसको एक साइड से आएगा, so अल्फा बाई E1 स्क्वायर. अब अगेन इसको cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा करो, sin थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos थीटा करो, यूजिंग द पाई बाई 2 माइनस थीटा, इट विल बी 4, ये भी 4 आएगा. So it will be 1 by sin of 4 theta by plus ये अपना cos theta dt आएगा, do. So this is the general result we got for scattering cross section for particles which are colliding of same masses as well as different masses. So this was our जो achievement of the class. ठीक है, एट द एंड हम कहां पर पहुंचे यहाँ पर. अब उसमें आप एक दो, आई विल नॉट रीड दिस पैराग्राफ, ठीक है. अगेन ही इज यूजिंग द डिस्कशन, ये 2-4-5 लाइनें पढ़ना इन टर्म्स ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. कैसे हम लिखते हैं, जैसे टू पार्टिकल्स आर मूविंग, दे आर कोलाइडिंग, सम ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड, सो रिमेनिंग एनर्जी वो कैसे हम इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूलाज. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एट द एंड. ठीक है, आप मुझे बताओ, आप ये कल कितने बजे आप क्लास में होंगे? मैं आऊंगा रूम नंबर सुई रूम स्टेज. अच्छा, तू करो काम, और आप जो है ना ये स्टूडेंट्स, कौन से वाले स्टूडेंट्स, उनकी मैं क्लास लूंगा ना, या आज लूंगा कि कल से लोगे?